Zombie apocalypse. So hi guys, this is our channel Fun Science with SHS and this is NCERT class 6 Science lesson 4 sorting material into groups. If you understand, please like, share, comment and subscribe our channel. So the first topic of today in chapter 4 is properties of material. The first property of any material or any object is appearance. Appearance means that how it appears. If you are viewing any PC or any laptop or anything else, you must be viewing that it is appearing like a tab or a big phone. Yeah. So we can in simple language say that materials usually look different from each other, and the property of by which they look different is called appearance. And you also know that wood looks different from iron and iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. So what must be the similarities in iron, copper and aluminium? Let's look in the next slide. So metals. Materials that have such luster are usually metals. What is luster? Luster is a shining luster shine है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे let's say I am viewing any gold object, so it is very shiny and it does not appear dull. That's the luster. That shining of that object or that metal is the luster. In the last slide, I said that iron, copper, and aluminium have some similarities that are not in wood. So that similarity is that they are metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. If on any metal the effect of air and moisture happens, it becomes rust. It has rust on that. You will explain. You will understand rust in few upper classes, and don't fear. Our next video is going to come on rust only. We therefore notice the luster comes only on freshly cut surfaces. Hardness. Hardness is the ability of a material to resist deformation, which is determined by a standard test where the surface resistance to indentation is measured. Let's say if I am standing on a surface and I by mistakenly my pencil fall down, and but the pencil did not broke, but that I'm standing on the third floor of my building and my pencil mistakenly throw down. That pencil will be broke down definitely, because that hardness of the hardness of that object or that pencil is not that resistant that it could hold that much pressure. Now we will understand soft objects and hard objects. सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हम आसानी से कंप्रेस यानी कि आसानी से हम दबा सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. पर अगर हमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज. हार्ड ऑब्जेक्ट. Some other materials which are difficult to compress are called hard objects. Example, iron. डिफिकल्ट टू कंप्रेस मतलब कि हम जैसे कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम किसी आयरन बॉल को अगर हम कंप्रेस करते हैं यानी कि दबाते हैं तो वो बहुत आसानी से दबती नहीं है, तो वो क्या हुई, तो वो एक हार्ड ऑब्जेक्ट हुई. अब हमारे पास अगला टॉपिक है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर.
सॉल्युबल यानी कि जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, यानी कि दैट मिक्सेस इजीली इन वाटर, यानी कि वी कैन से दैट some substances have completely disappeared or dissolved in water. We can say that these substances are soluble in water. Example, sugar. Um, insoluble in water. Insoluble बिल्कुल उल्टा होता है soluble के, यानी कि जो आसानी से मिक्स नहीं होते. Substances that do not mix with water or do not disappear even after we stay for a long time. These substances are called insoluble in water. For example, salt. जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये जो चीज़ें हम आसानी से पानी में मिक्स नहीं कर पाते उन्हें इनसॉल्युबल कहते हैं, और इसका एग्जांपल हम सॉल्ट ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट आसानी से पानी में मिक्स नहीं होता, पर वो अपनी एक अलग लेयर बना लेता है पानी पे, जैसे कि ऑयल ऑयल अपनी एक अलग लेयर बना लेता है, तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर है. अब हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स के टाइप आते हैं: ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. Those substances or materials through which we can see are called transparent objects. Example, window. If we are viewing from a window, we can see clear view of the outside. So the window is transparent object. Opaque objects. There are some materials through which we cannot see. These materials are called opaque objects. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से हम क्लियरली देख सकते हैं, पर ओपेक ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल उसका उल्टा होता है, यानी कि हम ओपेक ऑब्जेक्ट से बिल्कुल नहीं देख सकते. एग्जाम्पल, कार्डबोर्ड. अब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हम बात करेंगे. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे. द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, फॉग ग्लास ऑफ योर विंडो. फॉग ग्लास यानी कि आपने सर्दियों में देखा होगा कि फॉग फॉग आती है, और फॉग वो जब विंडो पे लगती है तो हम उससे देख तो पाते हैं पर क्लियरली नहीं देख पाते. यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. Thank you. Hope you understand it. Please like, share, comment and subscribe our channel. Press the bell icon.